Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institute. Today is 5th of September. Happy Teachers Day to all of you and to myself, because we all teach someone a lesson. Sometimes we teach as mothers, sometimes we teach as students, because your teachers also learn from you. It's a wonderful day. Happy Teachers Day to myself and to everyone. And today we are going to do this speaking topic, but again I have always said कि मेरे speaking बोलने से if I am doing speaking nicely doesn't mean आप भी nicely करोगे. You have to practice it. So please listen to this audio for 2-3 times. जहाँ पे आपको अच्छी lines मिलती हैं उसको 2-3 बार सुनो, उसको लिखो अपने पेंसिल से, pause करो, फिर दोबारा लिखो, फिर दोबारा pause करो. That is how you should go about speaking. Again, for the new students, you will get 3 minutes to prepare the task. अब जैसे ये टास्क कह रहा है, a parent comes into the outpatient department anxious to see someone who can help her. Who can help her मतलब she is a mother. Obviously हो गया ना. A parent comes into the outpatient department anxious to see someone who can help her. मतलब एक parent आपके पास आया है, ये anxious है कि कौन उसकी मदद कर सकता है. तो obviously मतलब she is a mother. बड़ी यही छोटी छोटी बातें तो हैं. So mother has come to you. Parent is accompanied by 5-year-old child. इसीलिए मैं आपको कहता हूँ सर और मैम ऐसी आदतें मत डालो. कई बार आप ऐसा टास्क पूरा सर में बोलाओगे लेकिन ये आपको छोटा सा हर याद नहीं रहेगा. क्या पता जब आपने अपनी टीचर के साथ प्रैक्टिस किया है सो आपको शायद तब भी याद ना रहो. सो तभी मैं कहता हूँ कि बजाय कि आप नाम पूछ सकते हो, अगर आप नाम भी नहीं पूछते तो यू में बहुत अच्छा टास्क चलता है. चलो एनीवेज, बट यू में मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको सर और मैम की जरूरत ना पड़े. सो अ मदर of 5-year-old child has come to you. Child is coughing and wheezing. तो टॉपिक इज कफिंग. सो आपको यही पूछना पड़ेगा. गुड मॉर्निंग. अगेन मैंने कहा फर्स्ट लाइन अपनी हमेशा लिखनी है. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दिस, हाउ मे आई हेल्प यू. आपके पास आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आएगा तभी तो बताएगा. तो वो बताएगी दैट सी आई एम हेयर फॉर माई डॉटर, शी इज 5-year-old and is having cough and I don't know what are the other symptoms, but she is having lot of cough and it is not getting subsided, so please help me nurse. Okay, don't worry. So आप कहोगे okay, don't worry, I am here to help you, so please do not panic. First of all I would like to ask you few questions. देखो पहले आपको few questions दिए हैं तो आप पहले few questions पूछ लो. अब questions में आप क्या क्या I would like to ask you. First of all I would like to ask you few questions. Again इतना मुश्किल टास्क नहीं है, trust me. आपको भी देखना कैसे आराम से. I would like to ask you few questions. आपने few questions पूछ लिए. So अब questions किस पे डिपेंड करेंगे? जो आपको टॉपिक दिया है. देखो कारपेट, रग, पेट, तो यही आपके टॉपिक्स में दिए हैं. So आप पूछोगे कि how is child home's life, means like is she comfortable at home. तो बताएगा हाँ कि भाई कंफर्टेबल रहते हैं. आपके घर की तो हाउ आर द लिविंग कंडीशंस, मतलब आप कैसी जगह पे रहते हो. इज मतलब डू यू मेंटेन द हाइजीन, हाउ आर द कंडीशंस एट योर होम, लाइक डू यू क्लीन योर हाउस डेली. फॉरेन में तो वैक्यूम होते हैं. सो डू यू क्लीन योर हाउस डेली, होम डेली. आई मीन दैट डू यू वैक्यूम क्लीन योर हाउस एवरी डे. ऐसे बनता है टॉपिक. अब आपने पूछा कि आप अपने घर की वैक्यूम क्लीनिंग डेली करते हो, तो पेशेंट आपको बताएगा हाँ या ना. सो अगेन इसको लिख के देखो. अगेन लिखने से आपको फायदा होगा. देन अगेन टॉपिक को आगे ले जाते हुए कि आर देयर एनी कारपेट्स और रग्स एट योर होम, तो आप उनकी भी क्लीनिंग करते हो. आर देयर एनी, जो दिया हुआ है वही, यहाँ पे देर का एनी कारपेट्स और रग्स इन द होम, तो मेरे को पता है क्वेश्चन बनाने के लिए बस आर लगाना पड़ेगा. आर देयर एनी कारपेट्स और रग्स एट योर होम. फिर आपको उनके बारे में ही पूछना पड़ेगा. ओके, सो डू यू वैक्यूम क्लीन देम डेली. दोबारा पूछ लो, नहीं तो वैक्यूम क्लीन वाला क्वेश्चन बाद में पूछ लो. ये आपकी समझदारी है. तभी तो कह रहा हूँ 3 मिनट्स जो आपको, व्हेन यू गेट द 3 मिनट्स टू राइट, तो आपको पता है ये ज्यादा अच्छा बनेगा. सो डू यू क्लीन योर होम डेली, आर देयर एनी कारपेट्स एंड रग्स, डू यू क्लीन देम एज वेल. तो अगर आप 2 बार पूछना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, डू यू क्लीन देम एज वेल. क्या उनको भी क्लीन करते हो आप. एज वेल का मतलब क्या आप उनको भी क्लीन करते हो. सो ये मैंने आपके लिए डार्क कर दिया ताकि आप सबको विजिबल हो. देन सजेस्ट एनी वेज टू, सो उसको बताओ कि आई वुड लाइक टू एग्जामिन. अब मैं एग्जामिन क्यों कह रहा हूँ,
ये आपको छोटी छोटी चीजें सीखनी है, पेपर में आपको दी होगी, पेपर में ऐसा टास्क नहीं आता क्योंकि ये बहुत पुराना टास्क है ओईटी का। सो इतना अजीब टास्क नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि बैलेंस्ड आएगा। लेकिन आपको जब हम पहले पढ़ाते थे ओईटी, क्योंकि आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 10 years, तो जैसे ये वीजिंग है, ये एग्जामिन के बाद पता लगती है। सो आई वुड लाइक टू एग्जामिन योर चाइल्ड। ये भी तो ध्यान रखना है, चाइल्ड को एग्जामिन करना है, तो मे आई कंसेंट लेनी है, क्या मैं कर सकता हूँ एग्जामिन? तो वो कहेगी हाँ कर सकते हो, तो कहो आफ्टर एग्जामिनेशन आई हैव फाउंड, ये लाइन आपको हमेशा आनी चाहिए एग्जामिनेशन के बाद। आफ्टर एग्जामिनेशन आई हैव फाउंड दैट ही इज हैविंग, या शी, एक चीज पकड़ लेना, या तो डॉटर है या सन है। ही इज हैविंग एलर्जी, ही इज हैविंग कफ एंड wheezing एंड इट कैन बी ड्यू टू एलर्जी। तो एलर्जी हो सकती है। अब वो मदर पूछेगी व्हाट इज एलर्जी नर्स, लाइक एलर्जी किस चीज से एलर्जी हो सकती है, आप प्लीज मेरे को बताओ। तो आपको बताना पड़ेगा किस चीज की एलर्जी हो सकती है। सो उसके अलावा सजेस्ट वेज टू कॉप अप विद द एलर्जीज, फिर तो आप एलर्जी को बताओगे कि ये पेपर में अगर आएगा तो ये लिखा होगा कि कैसे कॉप अप करना है, तो इसीलिए हमने ये एडिशनल पॉइंट्स बना रखे थे कि मेंटेन हाइजीन एनवायरनमेंट, एडवाइस टू रिमूव पॉजिटिव फैक्टर्स जैसे कारपेट, रग और पेट्स के कारण हो सकता है, अवॉइड कोल्ड बेवरेजेस एंड स्पाइसी फूड एंड टेक प्रॉपर मेडिकेशंस ऑन टाइम। तो ये तो है। जब भी आप लास्ट वाले टॉपिक पे आ जाते हो फिर तो बिल्कुल आसान हो जाता है। फिर तो आपको सिंपल ये लिखना होता है, यू यू शुड मेंटेन हाइजीन एनवायरनमेंट एट होम, ऑल्सो यू नीड टू रिमूव, बस you should or you need to remove all the positive factors from your home like carpets and pets. Further, it is important to avoid cold beverages and spicy food, which means इसका मतलब ये है कि आपको नहीं देने चाहिए, you should not give spicy food. सबसे पहले जब हम पढ़ाते थे, अगेन अब ऐसे टॉपिक्स नहीं आते, मैंने आपको कहा ना कि टॉपिक्स बहुत अच्छे से लिखे हुए आते हैं, लेकिन जब हम पहले पढ़ाते थे तो स्टूडेंट्स गलती करते थे, अपने आप बोल देते थे कि आपको पेट को भी रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन जब शुरू में यहाँ पे पूछना भूल जाते थे कि डू यू हैव एनी पेट एट होम, तभी हमने ये एडिशनल लाइन लिखी। तो पेट को अगर आप कह रहे हो कि पेट को घर से भेजना है, तो ये भी पूछना पड़ेगा डू यू हैव एनी पेट इन द होम। जब आप कारपेट रग्स की बात करोगे यू नीड टू आस्क फॉर द पेट्स एज वेल। टेक प्रॉपर मेडिकेशंस ऑन टाइम, तो इट इज इंपॉर्टेंट वाली लाइन भी आ गई। फर्दर इट इज एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक प्रॉपर मेडिकेशंस ऑन टाइम। टॉपिक हमारा तैयार है, अब देखते हैं जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है और कैसे फिट होता है। ये देखिए, अब आपका टॉपिक को, बल्कि आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आपका टॉपिक है। चलो मैं अब आपको पढ़ के दिखाता हूँ। Good morning. My name is Bhupesh. I'm a nurse over here. So how may I help you? Well, now see, I'm here with my son. He's 5 year old and he's having constant cough. And I don't know, he's having heavy breath and I'm really worried about him. Okay, don't worry. I'm here to help you. So before I can help you, I need to ask you some questions. May I? Yes, nurse, of course. Okay, so first of all, I would like to know about your child's home life, like whether he is active or whether he is lethargic at home, like means he is reluctant or active. Well, nurse, he is very active. Okay, that sounds good. Second question is that how are the living conditions at your home? Like, do you maintain the hygiene at your home? Yes, nurse, I clean my house every day. Okay, so cleaning house is good, but do you vacuum clean your house every day? Yes, nurse, I do. Okay, that is even good to know. Second thing, do you have any carpets or rugs at your home? Yes, nurse, I do have. Okay, so do you clean carpets or rugs every day? Well, not really, nurse, but yes, I vacuum clean, but it's not thorough cleaning. All right. Okay. And now I would like to examine your child, but before I can examine, I would also like to ask you one more question. Do you have any pet at home? Yes, I have a pet. We have a dog. All right. Okay. So can I examine your child? That's fine, nurse. Okay. So after examination, I have found that he is having cough, as you mentioned, and also there is some wheezing sound. So it seems that your child is having some kind of allergy. Allergy, nurse. Allergy from what? See, as you have told that you are cleaning your house every day, but you are not cleaning your house properly. So
carpets, rugs, they can catch dust, and dust can be one of the factors which can cause allergy to the kids. Apart from this, you are also saying that you are having pet, a dog at home, so it can be due to that as well. Further, I would like to tell you that even eating, like eating kind of a foods, children can be allergic to some kind of foods as well. Like if your child is vegetarian or non-vegetarian, what kind of food does he take? So food can be also one of the components. But nurse, how would I get to know what is causing allergy? Yes, I'm just there to explain you that allergy can be due to any of the things. So you have to observe carefully to your child whether it is happening due to pet, whether it is happening due to carpet or rugs, or whether it is happening due to food. So first of all, you need to remove the pet from your home. It is very important. And also to remove carpets or rugs from your home. Is it all right? Can you do that? Yes, nurse, of course I can. Okay, so that is great. So if after removing carpets or rugs and your pet from home, if everything becomes normal, that means your child was allergic to these things. If after that child still has allergy, that means that maybe the other factors are responsible. And also living conditions means if you are living any near to any industrial area. Suppose if around your house there are industries, so that can also be factors. So you have to take all the factors into consideration one by one, but we will start with the easy one first, that carpets and rugs should be removed and pets should be removed immediately. So can you do that? Of course, nurse. Okay, that is good to know. And also, I would like to tell you some other suggestions. So as you have told me that you are regularly vacuum cleaning your house, but you are not doing it thoroughly. So please maintain the hygiene environment and do thorough vacuum cleaning every day. Is it all right? Second, I have already told you to remove the carpets, rugs, and pet. Third, it is very important for your child to avoid cold beverages and spicy food and to take proper medications on time. Is it all right? Are you understanding? Yes, nurse. Okay. So I'm giving you a leaflet. It contains all the information. So I'm giving you a leaflet. It contains all the information regarding allergies and what allergens can cause allergies. So everything is mentioned in this leaflet. Please try to read this leaflet nicely. And still, if there would be any question that you have, there is a number down on the leaflet. You can call on that number. Is that all right? Yes, nurse. Okay. So I reassure you that there is nothing to worry. As you are saying your child is active. So that means it cannot be any kind of viral conditions or bacterial condition. So it can be a simple allergy. So you don't have to worry. So you will be fine. Your child will be fine. All right, nurse. Okay. And I also am fixing an appointment visit for the next week. So your child should come for the follow-up. We will see if the improvements are happening after removing the carpets, rugs, and pet. Is it all good? And please avoid the spicy and beverages and cold beverages. Is it all good? Yes, nurse, that's all good. Okay. So take care. Here is your leaflet. And I reassure you there is nothing to worry. And within like 2 or 3 weeks, if we can trace out the allergens, then your child would be fine. All right, nurse. Thank you. Take care. So that is how you execute the task. Again, it's very easy for me to speak, but in your exam, you have to convince the patient yourself. For that, you need practice. Listening is an important tool. अगर आप सुन रहे हो, obviously it will help you, but आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो एक स्पीकिंग को कम से कम 3-4 बार सुनो. इन्वेस्ट 15-20 मिनट्स. कुछ लिख के देखो. जो मेरी लाइंस आपको अच्छी लगती हैं उनको लिखो. सो टोटल हाफ एन आवर अ डे टू स्पीकिंग will make you feel very comfortable. एक टॉपिक को एक बार सुनने से कुछ नहीं होता. Please invest your time. That is how it will happen. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you.